Additional Chief Secretary, Sri Anand Mohan Sharanji, Dr. G. Anupamaji, Sri Vijayendra Kumarji, Atul Dwivedi ji, Haryana Higher Education Council Chairman, Sri Keshi Sharma ji, Senior Officers, esteemed Vice Chancellors, Directors, Chairpersons of the various institutions, Registrars, faculty members, brothers and sisters from media, and ladies, gentlemen. Just now, we have heard our visionary PM, Sri Narendra Modi ji, who shared his vision and roadmap for making India a developed nation by 2047. We have 24 years to work. With all dedication and unwavering commitment to realize our shared goal as envisaged by Honorable Prime Minister Sri Modi ji, while launching Vikasit Bharat 2047 Ideas Portal. The goal of making India a developed nation by 2047 is an ambitious objective that reflects the collective aspirations of the country's citizens and leadership. It envisages future where the nation transcends its current challenges and achieves comprehensive socio-economic progress. I request all of you in this contest to make a Vision 2047 cell in all your universities, specially devoted to today's workshop. Put QR code on the official website of your university for direct access to Vikasit Bharat portal. We also need to encourage our students to share their ideas on vision of Vikasit Bharat. For this, a social media campaign should be initiated to encourage them to become an active partner in making India a developed nation by 2047. I request you all to ensure that we have dedicated 10 minutes for deliberations on Vikasit Bharat at the start of a day in the college. I am sure you will create tomorrow itself a dedicated room for feedback collection from the students who will be submitting the feedback for the period of December 11 to December 25th. Our universities have a large number of affiliated colleges. As well, let us quickly plan a roadmap to Vikasit Bharat Utsav by involving students and discussions and debates. NCC cadets, NSS volunteers, and youth from other organizations should be encouraged to participate in Vikasit Bharat Utsav. Ladies and gentlemen, I want my universities and colleges not only to be a seat of excellence in terms of teaching, but also a strong driver of country's inclusive development, ensuring the accomplishment of cherished goal by 2047. Our VCs must ensure that emails are sent to students clearly stating the purpose of the ideas for Vikasit Bharat 2047. A campaign and asking them to give their suggestions on it. I also wish to inform the House that a draft email is being shared with the Vice Chancellors. This will have to web page link and QR code. VC should send this to the
emails of students available in the records of universities. I urge you all to encourage students to click the link and fill their ideas. Common hashtag, that is ideas for Vikasit Bharat, should be used generously by all the VCs. Also, Niti Aayog will post infographics on its social media handles. These will have embedded links to the web page and QR code for giving ideas. Our universities and colleges should retweet and reshare this post. They can tag Niti Aayog ideas for Vikasit Bharat. Ladies and gentlemen, our new national education policy is very much aligned with the vision of Developed India 2047. Skill development and entrepreneurial ecosystem are two significant pillars of the new national education policy, which will go a long way to realizing the goal of Vikasit Bharat by 2047. We have the examples of Japan, Germany, Singapore, South Korea, which rose against the extreme odds and transformed their turning points to become economic giants. India in Amrit Kaal is also at the cusp of such opportunity. मैं ये तो सूचना है बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों ने जो 10 डिलिब्रेशंस किए, डिस्कशंस किए, बहुत ही अच्छा लगा है। आप सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए। कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले अपने को तैयारी करना पड़ता। ये तैयारी जो है आज शुरुआत हुई है। ये तैयारी और ज्यादा होना चाहिए। कभी भी लक्ष्य लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लक्ष्य को पहुंचने के लिए जो परिश्रम चाहिए वो परिश्रम निरंतर करना चाहिए। निरंतर 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 एक साधना होती है। एक व्यक्ति महान बनने के लिए साधन करना पड़ता। वैसे ही जो है विद्यार्थियों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मैंने काफी यूनिवर्सिटीज में आया हूँ, प्राइवेट में भी आया हूँ, गवर्नमेंट में भी आया हूँ। मुझे लगता है एक मूड आ गया है, बच्चों में एक मूड आ गई है, एक नया मूड दिख रही है। विशेष करके जो बेटियां हैं वो बहुत ही आगे मूड में चले गए। उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, लड़कियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मूड में आ गए, लेकिन बच्चे अभी नहीं आए। कुछ बच्चे ऐसे ही है, तो इसलिए आपको वैसे बच्चों के ऊपर थोड़ा उनका ध्यान आप आकर्षित करना पड़ता। विशेष करके आप लोग जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे, सबसे ज्यादा महत्व है आपका और विद्यार्थियों का संपर्क बहुत बढ़ना चाहिए। संपर्क बढ़ना चाहिए। मैं तो चाहूंगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वर्ष के अंत तक हर विद्यार्थियों को ग्रुप में मिलने के लिए आप एक योजना कीजिए। हर विद्यार्थी को
जैसा आप शेड्यूल बनाइए 5 महीना 6 महीना, ये बहुत बड़ा मॉडल हो जाएगा। आप जितना विद्यार्थी को पर्सनली जानते हैं उतना विद्यार्थी वो समझेगा कि मेरे को बहुत ध्यान से देख रहे हैं हमारे वाइस चांसलर, उसमें परिवर्तन आता है। आप ज़्यादा बोलने के बजाय हम थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे, वो ऑटोमेटिकली ही बनता है। लेकिन वो समझना चाहिए ये मेरे को बहुत नज़दीक है, ये मेरे को बहुत नज़दीक है। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये वाइस चांसलर साहब है, ये हमारा 3 साल का संबंध है, ये नहीं रहना चाहिए। वो समझना चाहिए मेरे जीवन भर का संबंध है, ये वाइस चांसलर, ये प्रोफेसर मेरा जीवन का चेंज करने वाला है, ये बात उसको ध्यान में लाना। वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई मैं 3 साल पढ़ के डिग्री लेके चले जा रहा हूँ। ये ऐसे जो मूल बातें, ये बात अगर आप वातावरण बनाएंगे, मूड और अच्छा बनाएंगे, काम जो है बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छा, सोच अच्छा है, सोच में कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में, आचरण में हम जो सोच रहे हैं उसको 50% भी रहना चाहिए। हमारा सोच बड़ा रहता है लेकिन आचरण में थोड़ा कम दिखता है, ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बच्चों में कितना आया, ये बहुत महत्व है। तो इसलिए इन बातों को आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ये मीटिंग सक्सेस होने के लिए बहुत ही परिश्रम किया है, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत कम समय में इतने वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के सारे प्रोफेसर्स इतनी बड़ी संख्या में, और हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स सभी लोग आकर इतना जो चिंतन किए, बहुत ही महत्व है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। इसके लिए मैं आप सबको और एक बार अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। लेकिन आज शुरुआत जो की है, और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ। आप वाइस चांसलर हो, प्रोफेसर हो, आपका समय होता है, यानी कुछ लोग 2 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 5 साल में रिटायर होते हैं, कुछ लोग 20 साल तक रहने वाले हैं। लेकिन ये नहीं समझना कि मैं 2 साल में क्या कर सकता हूँ, मेरे से क्या होगा, ये मत सोचिए। आपके 2 साल के पीरियड में जितना शेड्यूल पूरा होना चाहिए उसको पूरा करके ही जाइए, ये मन को निश्चय कीजिए। जनरली हमारे ब्यूरोक्रेसी में, हमारे ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो सरकार की व्यवस्था हो, प्राइवेट का व्यवस्था भी हो, जब चले जाते तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, अब जाना ही है, मेरे को जाना ही है, ऐसा मत सोचिए। 1 साल क्यों ना हो, 6 महीने क्यों ना हो, आप लोग जो है इस काम को पूरा करने के लिए मैं कटिबद्ध रहूंगा, ऐसी भावना आपके मन में रखिए। शायद प्रोफेसर लॉन्ग टाइम रहते होंगे, तो इसलिए हम सब लोग एक टीम के रूप में, और जो विषय बताए गए 10 पॉइंट्स डिस्कशन किया है, काफ़ी अच्छा है, इसको और आगे बढ़ाइए। समय कम आपको दिया गया है, बेल बार बार मार रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा समय ज़्यादा दिए तो और अच्छा रहता था। बेल मारने वाला मामूली आदमी है, इसलिए वो मारते जाता है, उसको बोलते गए जल्दी मारो, बेल मारो। विषय अच्छा रहता बुरा रहता उसको पता नहीं लगता। खास करके लास्ट के जो 3 लोग जो बात कर रहे थे उनको और ज़्यादा समय देना था। और भी इस विषय पे हमारा आफ्टरनून सेशन में चर्चा है, तो इसलिए आप सभी लोग प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्प से
उनके दृढ़ संकल्प को हम आगे बढ़ाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए। यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है। सबको और एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। Change our friend, but we cannot change our neighbor. तो जो नेबर से हमें थ्रेट है, चाइनीज गेम्स एंड ऑल, एक तो ये चीज, ये हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है जो हमारे यूथ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा है गवर्नेंस की बात, जो कि सभी ने कही है कि लॉ एंड ऑर्डर तो है बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, तो वी नीड टू थिंक ओवर दैट एग्जीक्यूशन of the society, and we take decisions for each and every component of the society. So I first invite the Vice Chancellor, Sir, Professor Malik, to please enlighten us on this topic. सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को और हमारे देश के नेतृत्व को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, वास्तव में हम अपने देश में जो अप्रोप्रिएट टाइम है जिस पे हमें सोशल या टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वो उसको कर पाएंगे। हमारे सामने 25 वर्ष का समय है और मेरा ये मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि मैं विकास प्रशासन और विकास को पढ़ता रहा हूँ, कि हमारे पास वो सभी रिक्विजिट रिसोर्सेज हैं जिसके बेस पर हम ऐसा कर सकते हैं। हमने हमारे देश में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, खास तौर पर गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और हमारी जो यंग जनरेशन है उसके जो पार्टिसिपेशन है उस खासकर से उसका हमने एक शुरुआत की है। खास तौर पर अगर हम ये देखें कि हमारा जो प्रशासन है और प्रशासन से संबंधित जितनी प्रक्रिया है, चाहे वो रेगुलेशन में है, चाहे विकास में है, चाहे वो वेलफेयर में है, चाहे हमारी एजुकेशन में है, सभी जगह पर हमारी जो ज़रूरत है जनसहभागिता की। हमारी जो ज़रूरत है उत्तरदायित्व की, अकाउंटेबिलिटी की। हमारी ज़रूरत है कि हम अपने कार्यक्रमों को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से उसको कर सकें। हमारी ज़रूरत है कि हम अपने देश में रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर सकें। अगर आपने पिछले दशक में इस तरीके के कार्यक्रम देखे हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम उस तरीके की गुड गवर्नेंस के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। थीम जो आज की पैनल डिस्कशन का है उसमें हम गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं, और सिक्योरिटी में भी हम इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं। जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमने अपनी जो भी फोर्सेज हैं, खास तौर पर अगर हम थोड़े 20-30 साल पहले का समय देखें तो इंसर्जेंसी और उस तरीके की बहुत समस्याएं थी। अगर हम एक यूपी का ही एग्जाम्पल लेके देखें, अगर हम लोगों को साथ शेयर में करना चाहूँगा कि बिना लॉ एंड ऑर्डर के, बिना सिक्योरिटी के हम सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से या जहाँ भी विकास हुआ है, खास तौर पर वहीं पर संभव हो पाया जहाँ पर उस तरीके की सिक्योरिटी रहे। हमारे अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे जो सरहद का जो अंतिम गांव है वो अंतिम गांव नहीं, प्रथम गांव होना चाहिए विकास की दृष्टि से। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी गुड गवर्नेंस की हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो जनसहभागिता का हो, चाहे एफिशिएंसी का हो, चाहे इंक्लूसिव और इक्विटी का हो, उन सब का अगर हम उसमें उनके साथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के माध्यम से, रोड्स के माध्यम से देश बहुत उन्नति कर रहा है, उसी तरीके से एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 इम्पोर्टेंट पिलर हैं जो हमने उन लोगों के लिए हम कर भी रहे हैं और ज़्यादा करने की ज़रूरत है
ताकि वहाँ पर एक स्थिरता और एक ट्रस्टवर्दीनेस जो वहाँ के सिटीजन्स में है देश के साथ आ सके, तभी हम अपने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है उसको पूरा कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Now I request Professor C. Rajkumar ji, Vice Chancellor, Occidental University, to please share his thoughts. Very good morning to all of you. I would like to recognize the presence of the Education Minister. After a very compelling and truly inspiring speech by the Honorable Prime Minister of India, where he articulated the vision of the Viksit Bharat 2047, this particular session is focusing on governance and security, and I'm going to confine my remarks to both of them, and especially what universities also can do in contributing to that. I think the word governance and the use of it is so critical in the overall, imagination for the future of India. And when we look at governance, I would like to identify 5 critical aspects of governance that I believe is so central to the vision of Viksit Bharat 2047. The first and the most important part of it is the good governance is about democratic governance. It's about sustaining and developing India's credentials and India's growth and evolution as a democratic country. In this process, we are a global leader. If there's one message that the G20 summit gave, is about India being part of the democratic evolution of the developing and the developed world, and to what extent India's leadership can promote that. So I would like to begin by our goals and aspirations to continue to be part of a democratic governance vision. The second, something that the Government of India and of course state governments have taken a lot of effort, which is to promote transparent governance. We cannot achieve the goal of good governance without transparency. A whole range of efforts have been undertaken with a view to promoting transparency and accountability in governance. This requires a reimagination of the exercise of powers by all authority, both governmental and otherwise. So the second aspect of good governance is about building a transparent society as we move towards 2047. If you look at the Transparency International rankings and other such rankings, if you look at the developed countries around the world, one of the important aspects of those countries is relatively lesser corruption and other forms of abuse of power prevailing in those countries. India is positioning itself and moving the direction of promoting greater transparency in governance. The third aspect of good governance is about inclusive and participating governance. If you look at a range of policies that the Government of India has promoted in the last decade, there is a thrust with regard to many parts of the developing aspects of states and districts. Focused on northeast part of India is also part of the effort to develop inclusive and participating governance. The strengthening of our Panchayati Raj institutions, Nagarpalikas, post 73rd and 74th Amendment of the Constitution, these are all part of an effort to improve and in many ways strengthen the quality of governance with regard to advancing both participatory and inclusive governance. The fourth aspect of good governance is about global governance. It's about India playing a significant role in the world. G20 was a good example. Not only India provided its leadership for the successful summit, but India also brought the African continent into the G20, which gave us enormous social and political capital globally. India is at the vanguard of providing leadership on issues surrounding climate change and migration. These are all aspects where India can no longer remain a country that can focus on India alone and not just South Asia. The big issues of our time, the contemporary challenges that we are facing around the world, be it the Ukraine-Russia conflict, be it the Israel-Palestine situation, India has played a very progressive and a very powerful and compelling role when it comes to addressing all these issues. So the fourth aspect of governance is global governance, and the fifth aspect, what I would call, is transformative governance. What the Honorable Prime Minister of India said, this is India's moment. If every country goes through a process, and if the next 25 years
is going to mean much for India. For us to move from a developing country to a developed country, we need to transform all institutions of governance and ensure that the transformation is deeply embedded in our civic, political and economic culture. We need to empower our youth. As we know, we are a country of 1.5 billion people, being the largest country in the world. But the most important part of that is the 1 billion people who are less than 35 years of age. When most parts of the Western world will become older, when most parts of the Eastern world, including China and Japan, will become older, India will be younger and will be younger for a longer time. Young Indians, especially the ones who are studying in our universities, in universities and higher education institutions across Haryana and around the world, they will be not only providing leadership for India, but the world at large. And that is why the vision of transformative governance has to go there. Let me quickly move to security aspect. A lot has been already said about it. I'll keep it short. I think the most important part of the security is how do we develop the concept of security as a part of internal responsibility. So here we need to recognize the role of external threats, but also internally empowering our military security. A lot has happened in recent times. India is able to develop an independent foreign policy that also has contributed to strengthening of our military spending, and all of that is in line with the military security aspirations that we need to promote. The second aspect of security is also about internal security when it comes to providing a better law and order situation whereby we can promote a rule of law society. Rule of law continues to be a challenging proposition. There are issues that we need to address. We need to strengthen and in many ways promote a strong police machinery in which we need to take into account the recommendations of the National Police Commission, and also to strengthen the internal security apparatus through an enlightened police force. We need to improve the quality of training and capacity building across our police force, not just at the top, but all around. The third aspect